Welcome guys, I hope you all are doing fine and safe. It is my privilege to be addressing you guys. Today as we start our new podcast, which everyone are striving for, from legality in courtrooms to our day-to-day lives, we will lead the way for you to the world of law. Brought to you by Sovan National Institute of Law. Today, as we move forward, we are going to address a very sensitive, developing as well as happening topic in India. Our changing, evolving, secular, liberal India. The topic that is vibrant as the rainbow and free as the ocean itself. About the community which is rising through the ember of conservative elements of the society. The community that is changing the mindset of the generation and making it move forward to a tolerant, open-minded and accepting environment. Yes, the LGBTQ community of India. So today we have a very special guest with us for this podcast. Let me introduce you, and it is my very tremendous privilege to introduce you all to our beloved professor. He is the assistant professor of Sovan National Institute of Law, Mr. Akash Trikha. Thank you. Sir, I welcome you and thank you for giving us your valuable time and joining us in our event. So without any further ado, we are going to start in the name of law. So first, I want to thank you again for joining us. I know it is a very busy time, and you giving us time, that is a very big thing for us. I am very sure that it will be a fruitful conversation. Your extensive experience towards the field of law is well known to us. And before going any further, I want to ask you a question for some curious minds out there. I know everyone is thinking about it and everyone wants to know. The question is that everyone has that question before coming to the law school. That is, why law? Yeah. In your life, why did you choose law? Okay. Thank you first of all for taking this initiative to start the podcast series, and I'm really privileged that I'll be the first speaker for this series. Thank you so much for having me. Now the question that you have asked कि why law? तो मैं उल्टा question पूछूंगा, why not law? क्यों law नहीं? क्यों और कुछ? So basically the stream that we have taken or we have chosen law, it's because we can do lot many things that others only dream of doing. Now when I teach you in the classes, I have taught you evidence, I have taught you IPC, transfer of property, and then law of torts. So these are the various kinds of laws that have been there in our country, and which help us to know that what is the sum and substance of this particular area of the field of the subject which you have been told to study. So जब आप लॉ पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि बहुत सारी चीजें हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, जिसको हम लोग यूज करके अपने डे टू डे लाइफ में भी चेंजेस ला सकते हैं. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी को ही लॉ पढ़ना चाहिए. आप एक सड़क पे चलते हुए आदमी से भी पूछोगे, उसको भी पता है कि कोर्ट किस लिए जाना होता है. तो हम उसके एक ब्रॉडर एम्बिट को पढ़ते हैं, बट उनको भी पता है कि अगर किसी के बीच में झगड़ा हुआ तो मुझे पुलिस के पास जाना है. जो हम अपने सीआरपीसी में पढ़ते हैं कि फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर एन एफआईआर. बेसिक चीजें हैं. तो मेरा भी वैसे ही लॉ करने का भी यही मकसद था कि मुझे पापा का सपना पूरा करना था. लाइक ही ऑलवेज वांटेड अ लॉयर इन माय हाउस. तो मैंने लॉ किया, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उस प्रोफेशन चूज नहीं किया लिटिगेशन का. मैंने टीचिंग अ प्रोफेशन चूज किया क्योंकि माय एंटायर फैमिली इज बीन इनटू दिस प्रोफेशन. सो आई एम आल्सो पार्ट ऑफ इट नाउ. मेरी मम्मी है, दीदी है, सब लोग इसी टीचिंग के फील्ड में हैं. तो जब मैंने लॉ किया तब मुझे बहुत कुछ पता चला कि हम लोगों की सोसाइटी में हम लोग तो 10 सेमेस्टर को पढ़ना, 5 साल का जो सफर है, इन दैट 5 years 10 semesters we have read about near about 100 subjects in total जो आप भी अभी पढ़ोगे. तो हर सेमेस्टर्स में हमें एक चीज पढ़ाई जाती थी, उसका हायर वर्जन दूसरे सेमेस्टर में दिया जाता था. तो इससे होता क्या है, आपको इन टोटो पूरी की पूरे हमारे जुडिशियल सिस्टम के बारे में पता चलता है. जैसे हम बोलते हैं कि देयर आर 3 systems of the government.
लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, तो हम लोग सब कुछ उसमें पढ़ते हैं, कहाँ से लॉ बनता है, कौन उसको इम्प्लीमेंट करेगा, जुडिशियरी का क्या रोल है। तो ये हमारी पूरी सोसाइटी ही है जो चलती है। तो ये ऐसा है जैसे आप मानो कि वेट मशीन जैसे हम करते हैं, किसी का भी अगर संतुलन सही नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वैसे ही हमारी सोसाइटी में लॉ का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा अहमियत है लॉ पढ़ने की। तो इसलिए बहुत से बच्चे हैं जो खुद खोज के समझते हैं कि क्यों लॉ पढ़ना है, और काफी कुछ बच्चों का आंसर ऐसे भी आता है कि सर पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया, तो इसलिए हमने लॉ कर लिया। तो चलो वो तो अभी कोई स्ट्रीम नहीं मिला, तो ये ऑप्शन ही है। पहले ये लॉ अलग था, अभी हम लोग जो लॉ पढ़े हैं इंटीग्रेटेड वाला जो कोर्स है, या अभी का जो 3 ईयर LLB का कोर्स है, वो बहुत डेवलप्ड है। ऐसे नहीं है पहले के लोगों के माइंड में ये था कि लॉ पढ़े हैं तो चीटिंग करके पास कर लिया होगा। नहीं, आज की दुनिया में तो ऐसा नहीं है। मैं सबको बोलना चाहूंगा कि मैंने भी बहुत मेहनत की है, और जितने भी जन आजकल लॉ पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड प्रेशर कि आपको इतनी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, समझना है। और ऐसा नहीं है कि आप बस एक ही दिन पढ़ लोगे तो आपको लॉ समझ में आ जाएगा। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो वो चलता ही रहेगा, बस यही है। वाह सर, ये तो पता चल गया कि लॉ कितना इम्पोर्टेंस है हमारे सिर्फ हमारे स्टडीज के लिए नहीं, पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे सिस्टम के लिए। एंड सिर्फ जो लॉ पढ़ रहे हैं उनको ही नहीं, एक नॉर्मल इंसान को भी जानना चाहिए कि हर वो इंसान के पास वो राइट होना चाहिए कि उसको पता चले कि उसके लिए क्या बनाया गया है, क्या पॉलिसी है उसके लिए। अब ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट बना देती है, लोगों तक पता नहीं चलता है, इसीलिए हमारे लीगल एड के प्रोग्राम्स होते हैं, हम लोग उनको अवेयरनेस पहुंचाते ही हैं। तो वो अच्छा लगता है कि हमें जो चीज पता है हम वो दूसरों पहुंचाते हैं वो चीज, कि बेटा आपके लिए ये काम है, आपके लिए ये है। हर एक स्ट्रेटा के लोगों के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, जो जब उन तक नहीं पहुंचती है तो उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर आपने लॉ किया है तो मेरी भी ये गुजारिश रहेगी सबसे, जो भी देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं, कि अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी पता है उसको हमेशा शेयर कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, उससे यू विल फील बेटर। एंड दिस इज द सोसाइटी दैट वी लिव इन, कि वी ओनली हैव टू शेयर व्हाट वी नो सो दैट इट बिकम्स अ लिविंग प्लेस, अ गुड प्लेस इन हार्मनी, दैट वी कैन एक्सचेंज आवर आइडियाज एंड थॉट्स एंड एवरीथिंग, एंड इट बिकम्स अ प्लेस ऑफ यूनिटी। एंड वही चीज है हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट वी ऑल एक्नॉलेज द फैक्ट। Okay, sir. So, moving forward to the topic that we have decided to be discussing today. So, LGBTQ community. What is the history of it, sir? I know these few syllables came from the far western part of this world and became a revolution. But I know it was there always in every part of the world. The community, the people always were there. So in India, what was the history, how it's developed? Okay. So the concept of LGBTQIA plus community is not a new thing. Now, why we are talking about this is because we have been introduced to this concept at a very later stage. We have few things that before we go into that we should be aware of. Now the terminologies, people are not clear with the terminologies. What is LGBT, then QIA plus, that plus sign is inclusive, that we can include it to be anything like pansexual, asexual, or questioning the people, anything. It's a plus sign means it is always there for inclusion. जो भी कोई आगे चल के भी उस कम्युनिटी के साथ अपने आप को रिलेट कर सकता है, द कम्युनिटी इज ऑलवेज देयर टू वेलकम। और सबसे पहली चीज तो कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, इसको लेके बहुत सारे लोगों के बीच में होमोफोबिक भी लोग हैं हमारे बीच में। नाउ दैट दे आर नॉट ओपन टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, और वही प्रॉब्लम की जड़ है, वहीं पे ही problem hai. So there lies the problem where people are not open for change, open for acceptance. अब होता क्या है, if a thing has been set in a particular manner,
you try to deviate that thing, you will face obstructions. ये जनरल रूल है. अगर बोला गया a plus b is equals to c है, तो सभी लोग उसको बोलेंगे a plus b is equals to c for instance. But अगर कोई बोले नहीं a plus b is equals to E हो सकता है, वहां पे लोगों का ऑब्जेक्शन क्रिएट हो जाता है. यही चीज हुई है हमारे इन कम्युनिटी के लोगों के साथ, जिसको आज हम इतना अहमियत देते हैं. सो नाउ जस्टिस इंदु मल्होत्रा हैं, जिन्होंने बोला था दैट वी हैव टू गिव कंपेंसेशन टू द पीपल जिनके साथ इतना बुरा हुआ है. क्योंकि हिस्ट्री से अगर हम देखें, जैसे आप पूछ रहे हैं, दैट इट हैज बीन अ लॉन्ग ओवरड्यू टू देम. They have not been given the right, they have not been given their due share of the existence in the society that they wanted. So this was the quote of Justice Indhu Malhotra, that history owes certain things to be given to them because it has taken a long time. ये overdue चल रहा है उनके लिए. तो अगर हम बात करें history की, now for instance India, we are talking about the LGBT community in India. So it's not something new. Now India has been a place where from you see that Kama Sutra has been originated. Now you go to the temples of Khajuraho, you will find the inscriptions, the sculptures, the things over there which are very quite normal. Now tourists come there to see that. Now what is there in that temple? What is there in these sculptures? It is something that a man is having a kind of shape in which he is having a relationship with another man, or a woman is having another relationship with a woman, or that means they depict that there was certain things which were known to the forefathers or to the time when we are discussing, that उनको पता था कि ये सब चीजें सोसाइटी में उस समय भी प्रेवलेंट करती थी. तो जब इंडिया ने, हम इतने प्राइड से बोलते हैं कि कामा सूत्रा को बनाया है, तो हम ये चीज को क्यों एक्नॉलेज नहीं कर सकते कि उसमें होमोसेक्सुअलिटी भी एक पार्ट है. अगर हम सेक्सुअलिटी को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, तो क्यों नहीं हम होमोसेक्सुअलिटी को पार्ट दें. हम सिर्फ क्यों हेट्रोसेक्सुअलिटी की तरफ ही बात करते हैं. सो वो जो चीज है जो बनाई गई है, वो हिस्ट्री के हिसाब से बहुत सारे इंस्टेंसेस आपको मिलेंगे एंशिएंट में. जैसे मैंने आपको बताया अभी खजुराहो के टेम्पल के ऊपर जो स्कल्पचर्स हैं, उनके ऊपर अगर आप बात करो, आप और पीछे चले जाओ, आप महाभारत में चले जाओ, वहां पे भी आपको मिलेंगे इंस्टेंसेस जहां पे ऐसे सब चीजें होती हैं. देयर इज अ कैरेक्टर ऑफ शिखंडी जो बहुत ही फेमस है, सबको इस बारे में पता है, नॉलेज है. तो वो क्या थे, उनका नेचर क्या था, वो मेल थे या फीमेल थे. तो उनको भी समझाने के लिए बहुत टाइम लगा कि नहीं, ऐसे लोग भी हमारे बीच में एक आदमी और औरत के साथ भी एग्जिस्ट करते हैं. तो जैसे आज हम देखते हैं किसी को कि अरे ये ट्रांसजेंडर है, क्यों बोलते हैं हम कि ये ट्रांसजेंडर है, तो उसका मीनिंग क्या है पहले हमें समझना चाहिए कि he is not the gender which has been assigned to him at his birth. He has changed, या वो नहीं है जो उसको at birth में जो जेंडर प्रोवाइड किया गया है. He do not associate, the body does not associate with that particular thing. तो यही चीजें लोगों को नहीं पता है. अब अगर आप देखो कि L का जो फुल फॉर्म है LGBTQ, इसमें उसका मतलब क्या है, लेस्बियन, a girl or a woman having a relationship with a woman. Then again a male person having a relationship with a male person. ये सब चीजें हम लोगों को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है. अब अगर एक लड़का एक लड़की रोड के ऊपर, मॉल में, कहीं भी जगह पे हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं, या थोड़ा भी अगर वो कोजी हो रहे हैं, तो दैट्स ओके. बट सेम चीज अगर एक सेम सेक्स के कपल कर रहे होंगे, वहां पे पब्लिक का अपना सेट ऑफ ओपिनियन आ जाता है कि क्या इनके पेरेंट्स ने इनको ऐसा किया है, ऐसा वैसा किया है, उनको परवरिश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. तो ये जो ट्रेंड चले आ रहा है ना, इसको चेंज करने में अभी भी टाइम है. तो उसी चीज का ही रेप्लिका हम लोग देख सकते हैं कि जब आप जुडिशरी में आते हैं, जब आपको पता चलता है कि क्या लॉ आपके बना रखे हैं. अब हर वो चीज सोसाइटी में जिसके ऊपर आपने कभी भी कोई भी चीज के लिए ऑपरेशन किया गया है या कुछ किया गया है, आपको स्ट्रेंथ कौन देता है? जुडिशरी देगी. जब तक आपको लॉ उसके लिए नहीं बनता है, तब तक आप एक अपने राइट को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते. आप डरोगे उस चीज को एस्टैब्लिश करने से. सो दैट फियर इन द माइंड ऑफ द पीपल नीड्स टू बी एड्रेस्ड, एंड द people, those who make the law, they have passed certain legislations. Over the period of time, there have been cases which have come forward, which have been a milestone in the LGBT community aspect.
So here also the same thing has been provided. Now, talking about the stages, there have been a great development. The instance that I was saying you from the Mahabharata, that is of Shikhandi, even you know that Arjuna, he was also there as he has taken the exile. Yeah, he has taken a female part for a certain period of time. क्यों? क्योंकि उसको exile में रहना था. So he has changed himself into a lady. अगर हम बात करें विष्णु पुराण की, तो उसमें जब सागर का मंथन होता है, when there is the churn of the ocean between the demons and the gods, तो there also Shri Vishnu takes an avatar, Mohini avatar. So he again being a male transformed himself into a lady, and then he is giving all the things. So ऐसा नहीं बोल सकते कि we are only male or only a female. अगर आप शिव जी को देखो, तो देयर इज ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ अर्धनारीश्वर, जहाँ पे कि वो एक तरफ है और पार्वती माँ एक तरफ है. सो द इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन पार्ट ऑफ द developmental aspect of the male and female or the gender thing is not that rigid. इतना ज़्यादा rigid नहीं है, वो बहुत fluid किस्म की चीजें हैं. But it has always been a wrong notion. आई वुड रादर से कि लोगों के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं पैदा की गई थी. बहुत लेट से ये चीज समझ में आई लोगों को कि ऐसी भी चीजें हमारे पुराणों में, हमारे जो ग्रंथ हैं उन सब में हैं. So this is not something which is very new. So I am a huge fan of Devdutt Patnaik. He is another person who has vast knowledge about the Vedas and everything. So I have also always tried to see his part of the things that he used to say. So he is also again advocating the same thing, that the society will change only when we open the eyes, if we bring to them the facts in front of them. उनको समझाना पड़ता है और एक्सेप्टेंस आने में टाइम लगता है. ऐसा नहीं है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कर रहे हैं, तभी हम लोगों के पास इतने सारे केसेस हैं. दैट इज द रीजन दैट टुडे वी आर इन प्रोग्रेसिव. वो LGBT का जो नॉर्म था, जो क्लोजेट के अंदर जो लोग रहते थे, डर के रहते थे, नाउ पीपल आर ओपन अप. वो समझ रहे हैं सोसाइटी को that yes we are accepting in nature, and that is the reason they are coming out also. Now that coming out is another problem for people, because they fear that are they going to judge me. अगर आप किसी को बोलोगे कि मैं गे हूँ या मैं बाइसेक्सुअल हूँ, सामने वाले को ओपिनियन एकदम चेंज हो जाएगा कि अरे what is he talking about, why is he. Maybe that fear in the person is not letting the person to come out of the closet. But as friends, colleagues, we all should be supportive if we know that there is anyone who is at this stage or is, dealing with the sexuality or is confused about the sexuality, what he wants, what he is. He might feel trapped in his own body because he has been brought up in a certain manner. अगर एक लड़का है तो उसको बोला गया है कि आपको मैचो दिखना है, आपके अंदर वो मैस्कुलिनिटी होनी चाहिए, आप कभी लड़की जैसे बात नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बी सॉफ्ट, रो नहीं सकते जैसे आपने बोला. Why these constraints have been made? That is the problem. अब मुझे अगर रोना आएगा तो obvious ही बात है, मुझे कोई चीज अफेक्ट कर रही है तो I'll show it off, I'll cry. Why to restrict yourself for this thing? यही तो चीजें हैं जो हमने गलती की है. बट चलो कोई नहीं, आज के जो पेरेंट्स हैं आज के टाइम के, वो अपने बच्चों को वो चीज नहीं सिखाएंगे जो कभी हमारे पेरेंट्स को हमारे साथ इतना ओपन में डिस्कशन करना चाहिए था. दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. हाँ सर, तो जैसा कि हम जानते हैं, लाइक इट टुक डिफरेंट स्टेजेस. लाइक एक साथ सब कुछ नहीं होता, एक साथ हम आगे एक साथ एक ही स्टेप में नहीं बढ़ सकते. छोटे छोटे स्टेप से हम लोगों को बढ़ते बढ़ते जाना है. वैसे ही ग्रोथ होगा. तो वैसे ही ये टॉपिक सर ऐसे ही बहुत सारे स्टेजेस से आया है एंड होपफुली आगे भी जाएगा. तो इसके डेवलपमेंट से रिगार्डिंग सर, हम जानते हैं कि इंडिया में कैसे सिचुएशन रहा है. ये सब LGBTQ का जो रिवॉल्यूशन था वो चला रहा है यूएसए, यूके, जर्मनी से. बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं, जैसे हम LGBTQ डेज मनाते हैं एंड ऑल दैट. तो इन इंडिया इसका डेवलपमेंट क्या था? लाइक द मेन थिंग इज द राइट्स एंड लॉज. इंडिया में उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? सबसे पहले अगर हम राइट की बात करें, तो अगर हम इसको एक फॉरेन कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, जैसे आपने बताया अभी, यू टोल्ड अबाउट, तो यस, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच हैज बीन फॉरेन टू अस.
the thing that I said कि ये चीज को समझने में हमें बहुत टाइम लगा, because when we have instances of Vedas and Puranas in which we were having such homosexuality, such transgender people in our own Hindu system, so it would not be fair if we say that we had taken this concept from the foreign country. Rather, the foreign country had given us the opportunity of explaining ourselves. हमें वो चीज उनसे सीखी तो हमें टाइम लगा वो चीज को एक्सेप्ट करके हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाने में. Now, if we talk about any law on this point, we had section 377 of the Indian Penal Code, which is talking about the same issues. Now, when the law was there, so there have been some historic mistakes also which have been committed. Now they have been, with the time, they have been overruled also. So the first thing that in 2009 which happened was when the Supreme Court has said that that LGBT rights and the people should be given the due what has been not given till now. But after that, again, they have said that it is constitutional in nature. Section 377 is valid in nature. There is nothing which has been wrong. So after that, when this judgment was passed, there was a time where the LGBTQ community celebrated. It was a time for joy for them, and for them, when they celebrate, it's an because it's an umbrella term that we use, so they come out to street and they have these pride parades. So in India also these days you see that every state is going for pride parades. In Bhubaneswar, in our state also, we had the pride parade. So what is this? Why do they do so? उनको क्या जरूरत है ये करने की? It is just an form of expressing them that as you people enjoy, we are also the part of the society, we can also enjoy. So हम लोगों को ये प्राइड डे सेलिब्रेट करने का या प्राइड मंथ सेलिब्रेट करने का जरूरत इसलिए पड़ा क्यों? क्योंकि अभी तक हमने उनको सही रिकॉग्निशन नहीं दिया है. जिस दिन हम ये दे देंगे उस दिन वो हमारी ही जैसे सोसाइटी में इंक्लूड हो जाएंगे और ये सब चीजों का जरूरत नहीं पड़ेगा. इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस दैट व्हाट यू कैन डू आई कैन ऑल्सो डू. यू बीइंग एन हेटेरोसेक्सुअल, आई कैन बी एन होमोसेक्सुअल, एंड इट्स ओके टू बी दैट. इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. आप अपनी जैसे राइट ऑफ प्रिवेसी एंजॉय करते हो, हमारे पास भी हमारा राइट ऑफ प्रिवेसी होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि ओनली ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स सिर्फ हेटेरोसेक्सुअल्स के लिए हैं, ट्रांसजेंडर, होमोसेक्सुअल्स और बाकी जो अम्ब्रेला टर्म के अंडर में आ रहे हैं जो कम्युनिटी ऑफ पीपल, उनके लिए नहीं है. सो यही चीज समझाई जाती है जब हम किसी चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं. तो अगर हम सेक्शन 377 की बात करें तो उसमें जितने भी केसेस हैं, जैसे नवजोत सिंह जौहर का केस है 2018 का, विच इज वन ऑफ द सेलिब्रेटेड जजमेंट्स, जो बताता है हम लोगों को कि जो हमारे दीपक मिश्रा थे जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 6 सितंबर 2018 में उन्होंने जजमेंट पास किया दैट you should not question anybody's identity, you should accept me as who am I, what am I. So उनका कहने का मतलब ये था कि आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. आप उस आदमी को उसी तरह एक्सेप्ट करो जैसा वो है. अगर वो नॉर्मल है आपके लिए तो वो नॉर्मल है. अगर आप उसको अब नॉर्मल जैसे सोचते हो तो वो आपकी गलती है. वो उसका फ्रेम ऑफ वर्क है ही नहीं बिल्कुल भी. सो इट्स जस्ट द नॉर्मलसी दैट द कोर्ट्स हैव बीन ट्राइंग टू tell about in all these situations. बीच में एक पीरियड आया था, there was a duration wherein the wrong was made. I mean, the mistakes are made by people. So which was overruled in 2018 judgment. But उससे पहले का जो judgment आया था उसमें उन्होंने बोल दिया था कि 377 जो है ना वो वैलिड ही नहीं है. मतलब वी कैन नॉट टेक एनी स्टैंड्स ऑन 377. सो इस चीज को समझाते हुए 2018 का जो हमारा जजमेंट है नवजोत सिंह का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे पहले का नाज फाउंडेशन का है, उससे पहले सुरेश कौशल का जजमेंट आया था जो कि एक गलत थोड़ा सा जजमेंट था जिसको हर जगह पे सेलिब्रेट नहीं किया गया है उस जजमेंट को. तो अगर हम बात करें ऐसे जजमेंट्स की तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने ही जजमेंट को ओवररूल कर सकता है. तो इसलिए उन्होंने नेक्स्ट जजमेंट में 6 सितंबर के जजमेंट में नवजोत सिंह के जजमेंट में उन्होंने ओवररूल कर दिया और ये राइट एस्टैब्लिश कर दिया कि अब एक पार्ट जो है 377 का वो डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है. दैट मीन्स कि हर वो आदमी जो केपेबल है कंसेंट देने के, एनी पर्सन हु इज एबल टू गिव द कंसेंट अबव द एज ऑफ मेजॉरिटी, व्हाटएवर ही वांट्स टू डू
it is as per his convenience that he can do. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. I'm not being very section oriented because that section is providing a lot many things. I'm just giving an overview, overall idea about the same thing. तो उसके बाद आप अगर देखो पुत्र स्वामी का जजमेंट भी है जिसमें आपको राइट टू प्रिवेसी के बारे में बताया गया है. अगेन दैट्स फोरमोस्ट थिंग. जैसे हम बात करते हैं कि एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में प्रिवेसी होनी चाहिए, वैसे ही दो पार्टनर्स के बीच में क्यों नहीं प्रिवेसी होनी चाहिए. Now when I say partner, it can be a man, it can be a woman, or it can be a queer person, anything, anyone who want to be, who can be accustomed himself as a partner. तो कोई भी हो सकता है उसमें, बट उनके पास भी वही राइट्स हैं, वही फंडामेंटल चीजें हैं जो हमारे पास है. अब वो भी हमारे इंडिया में ही है, कॉन्स्टिट्यूशन उनको भी गवर्न करता है, तो हम उनको बाहर तो नहीं निकाल सकते. दे आर नॉट आउटकास्टेड फ्रॉम द सोसाइटी. व्हेन दे आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी, वी डेफिनेटली ओ देम दी राइट्स. स्टेट के पास उनके लिए भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए. अब बहुत बार आप न्यूज में देखते हो कि दो लोग जो शादी करना चाहते हैं सेम सेक्स के, उनको अलाउ नहीं किया जाता है. बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट किए जाते हैं. फेसबुक में भी हम बहुत सारे पोस्ट देखते हैं जो होमोफोबिक पोस्ट आते हैं. Now, why do these things happen? Only because either there is scarcity of knowledge, they don't know what they are doing, that's a wrong information which has been passed to them, or if the laws have been made, they have not been yet incorporated. तो जो आप अभी पूछ रहे हो कि डेवलपमेंट, the phase of development is still on, it's not over yet. हाँ सर, जो हम लोग इस बारे में जाने जो लैंडमार्क केसेस एंड ऑल थे, एंड यू सेड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी आर जस्ट डेवलपिंग, इट इज नॉट ऑलरेडी डेवलप्ड, वी आर इन द फेज, एंड वी expect it to be like a gradual development to a positive result. It will be a gradual development, slow, but it's going on in a good pace, in its own pace. It's going on. For a country like India. For a country like India. So, moving on, हम जानते हैं कि क्या क्या लॉज पास हुई हैं, डिक्रिमिनलाइज किया गया है, बट व्हाट अबाउट क्राइम अगेंस्ट देम? लाइक व्हाट अबाउट if somebody sees something, insults something to a person, to a homosexual person, about anything, or if he harms him on the subject that he is homosexual. So what are the laws against it or protecting that person? वही मैंने अभी आपको बताया, इंस्टेंस भी दिया था आपको. अगर हम क्राइम की बात करें, क्यों क्राइम हो रहा है, क्यों आपको कोई मारने जा रहा है अगर आप किसी लड़के के साथ हो, या कोई अगर दो लड़कियां आपस में हैं, क्यों उनको कोई टीज आउट करेगा? क्यों? क्योंकि वो उसके लिए नॉर्मल नहीं है. दैट्स नॉट नॉर्मल फॉर द पर्टिकुलर पर्सन. तो जो होमोफोबिक पर्सन्स हैं, जो ये चीज टॉलरेट नहीं कर सकते, कभी कभी वो लोग बारबैरिक हो जाते हैं, कभी उनको वो मारधाड़ कर देते हैं. They used to give them threatenings. You see that they make videos while torturing them, while doing any kind of abusive things. They go for the verbal spats with them. So these things happen in the society. But we have to control all the things in our society. So if the crime rate for them is increasing day by day, now it is the work of the government to take care about that, and the judiciary should make certain rules and regulations for that, wherein they will also feel safe when it comes towards the part of safety. Now in India, we almost have all the gender biased laws. There is a scarcity of gender neutral laws, because you see any kind of section in the IPC, in any of the provisions, it's always that when a man is committing an offense against a woman, for the specific set of sections which are talking towards the safety of the woman, but there also the safety of the man has no women, right? It's a gender specified law. That means it is specifying that only when the man is committing the offense on this and this persons, as per this and this thing, जो सेक्शन का आगे चलता है. तो वही जो क्राइम्स हैं, now क्राइम का कोई जेंडर नहीं है. It can be done by any person at any point in time, whenever it can be done. जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, I told you about the same thing, that crime has, we cannot bifurcate crime as per the gender, that no, this is the thing which a man will do, or a woman will do, or a boy will do, or a girl will do. Physiologically there are differences, but
when it comes to the mental elements in the crime, there it is the same for everyone. Now, if there are any crime against the people of the society, when we talk about the LGBT community, they are also a part of the society of India. So, all the laws which are there for the protection of the general people, general couple, the same thing should be applicable. But this problem being that, where are they going to be registered? If there is no such thing, where are they going to be registered for that particular thing? Now, suppose we know that husband and the wife, as per the Hindu law, they get married. Now, what about a boy and a boy, they want to get married? Two male person they want to marry, or girls they want to get married, the lesbian relationship they want to marry. So what is the law under which they are going to get married? Is there any law specifically wherein they are going to get married to? So Special Marriage Act comes into picture, but that again needs certain modification amendments wherein they will be dealing about the same thing, because as per Hindu law they cannot marry, but we have Special Marriage Acts which are going to talk about the same thing, which will be taking care of the scenario altogether. Again, if they want to go for adoption, yes, the partners they cannot live alone. They want to go for adoption as per the adoption laws of India. Which section is going to come for their safety, or which section is going to come for their health, wherein they can go for adoption? So various laws are there, but as I said, they are lacking certain things. As per the time, as per the growth, as per the development, they need to be changed. Just 2-3 days back, two couples, they have filed again a case in Supreme Court. I guess a PIL was filed. Now they want that the Special Marriage Act should acknowledge their marriage. One is from Bengaluru, one is from Hyderabad, what I remember. So they have they have been putting the question on the government that they want their marriage to be solemnized. Under what provision of law are they going to be governed by? If it's not the case, then in India they will not be feeling secure. They will have to go to any other country wherein the same sex marriage or the same couples are being recognized, where the union of the same couple is recognized, or where the marriages for the same couple is being recognized. So you take into consideration the aspects, you take into consideration the crime, it has to be well protected. Yeah. Now, if anyone is causing, injury to another person, suppose two persons are there, they are in a relationship, two male persons are there, they are in a relationship. Now, if somebody is inflicting an injury to one of the partners, what will be the form in which, what will be the status? जहाँ पे भी आप फॉर्म देखते हो वहाँ पे क्या लिखा रहता है? हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है, ब्रदर कौन है, सिस्टर कौन है, रिलेटिव कौन है, और उसके बाद ऑप्शंस ही नहीं आते. So that forms in which they are going to be governed, that also needs to be changed. Partners. इससे पहले ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई कॉलम नहीं आता था, सिर्फ मेल फीमेल रहता था. At least after the Nalsa judgment, when transgenders were given the recognition, that column has now been there that yes, I am transgender. उसके बाद आता है next column, others. So all these things will take time. When we gradually talk about these things, it will take time. But we have still the IPC, which is providing you for the penalization if any person is being harmed by the particular rules and regulations. Then the Indian Penal Code will, the sections will be coming into, and they will be getting the provision as per the general crime. As per the general crime scenario. Okay, so we got clear that there are no specific laws there to like protect. Yeah, we need certain good specified mainstream laws for the protections of the LGBTQIA+ community. Government is no doubt working. They are taking into consideration everything, but the path needs to be very, very clear to the society at large. Only the work being done and nothing being implemented is of no use. So that is important for us to understand. So as per what I understood, it is a twofold need. The first need can be termed as the laws that we require to protect the community, the people, yes, and the second fold is the law to acknowledge. That acknowledge part is very slow. That acknowledge part is taking time. That is what it is coming to. So moving forward,
I'm now going to ask you like the most typical question, the most typical entity of this world. So the name is society. So what do you think the perception of Indian society regarding LGBTQ? I know India is a place where there is strict conservativeness. It is going towards an open mind gradually, but still, our parents and their parents, they had very strict conservative mindset. Yeah. So, what about the society, the perception of the society? Are we really moving forward? Are the evolving laws are evolving us? See, society has to change with time. When the time is changing, society is bound to change. This is the interrelationship of the law and the society. If one is changing, the other is bound to change. Now, you won't find the laws which were in prevalent 10 years, 15 years back in our present context. Now, why did it happen? Because society changed. Just a normal example. We didn't had any strict laws for the rape or for the juvenile things. But what happened after 2013? The entire IPC's section 375, 376 and the Juvenile Justice Act comes, the POSCO comes, and they have been incorporated and changes have been there. Before 2013, there was least concernment about the rape or the amendments that have taken place. Now after 2013, we see that a plethora of rules and regulations, a number of rules and regulations, laws, bylaws, amendments coming into picture, and for the safety and protection of the victim, that is any prosecutrix or the survivor of the sexual assault. Similarly, here in our LGBTQ scenario, the society is accepting, but the problem still remains is the pace. It's slow. Now, the thing that I was addressing was about coming out as a person. That closet, that means you have a set of mind, and the mind frame is very, very important. How free do you feel? What do you want to what do you want the other person to be, acknowledging you about? That is something very, very important. Now, when people are not accepting, you will fear and you will never let, the truth come out from you. That whether you are bisexual or you're a homosexual or you want to just dissociate yourself from anything, any such thing like gender, and you just want to be free. So that is something which is not happening in India. This is because of lack of education. Now, from the early days, if the correct sexual education is being imparted to the kids or the children from a very early age, this problem would not happen. Now, there have been these instances, there have been this mechanism. We use social media. This can be one of the useful platforms where we can produce such things, such videos, short documentaries, wherein they can see that what is the mindset of the society, how society is actually working, and what they should do in order to bring the change. अब आप सीधा जाके मम्मी को या पापा को नहीं बोल सकते कि पापा और मम्मी I am gay. You cannot do so. आपको समझने में, उनको प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो चीज नहीं हो सकती है. बट आपको वही चीज उतने ही कॉन्फिडेंस से आपको कन्विंस करना है अपने मम्मी को और पापा को, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू एंड योर होम. अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो या आपके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आगे की जर्नी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाली. बट द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज यू बीइंग एबल टू एक्सेप्ट यू, who you are. If I am being able to accept that yes, I am this person, whoever is doing whatever is not material for me, I have decided that this is me, this is my path. Once you get to be very straight in your thoughts that आप क्या चाहते हो, आप वही चीज सामने वाले को पोर्ट्रे कर सकते हो. तभी उसी कॉन्फिडेंस से आप अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को कन्विंस करोगे. एक बार ट्राई तो करके देखिए. डरने, अगर आप इतना डर के रहेंगे तो देयर इज नथिंग दैट एनीवन इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर. और वैसे ही फिर आप डबल स्टैंडर्ड्स में जीने शुरू कर दोगे. दैट लाइफ विल बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर यू. यू विल नॉट बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. देयर विल बी फैमिली प्रेशर्स ऑफ यू टू be enacting in certain manner. Their mannerism would be different and there will be problem.
Now, what people think is gay means a person or a boy who is a bit of girlish attitude, or he is talking very politely, थोड़ा सा हाथ ऐसे वैसे करके बात करना. No, it's not the case. You should get it correct. Even a full bearded person, even a full stud person can be gay. This is what the mindset of the people are not changing. If they think about any lesbian, अरे इसने कुछ इधर उधर का खा लिया है, कुछ इसके अंदर चला गया है, तो उसको झाड़ लो, फूंक लो, some kind of activity, tantric activity, and then it will be okay. जय बाबा भोलेनाथ कर लो, आशीर्वाद दे दो, प्रसाद दे दो, वो ठीक हो जाएगा. It's not a disease. It's not something that you associate with. It is something that you have been provided by the nature. It's natural. So we need to accept that it is coming from within us and nothing that we have acquired anything from outside. ये बीमारी चीज जो है वो बाहर से आती है, फिर हम उसके लिए मेडिसिन खाते हैं, फिर हमारे लिए वो क्योर होता है. ठीक है, वो इंटरनल अगर कोई चीज है, that's very natural. अब मैं जन्म लिया हूँ, जैसे मैं लड़का हूँ तो मैं लड़का ही रहूंगा. If I am liking this particular person, I will like this particular person only. तो ये जो चीज है ना सोसाइटी में कि बहुत सारे लोग इसको सोचते हैं कि बच्चे आजकल फॉरेन मूवीज देखने लग गए हैं इसलिए वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या कुछ भी कि इन लोगों ने कुछ इधर उधर का खा लिया इसके लिए वो हो गया. तो ये सोसाइटी का दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इनकरेक्ट, विच इज रॉन्ग. एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि हमारे जनरेशन, हमारे पेरेंट्स तो इतने मैच्योर्ड हैं कि वो हमारे साथ वो बात कर सकें, हमसे वो चीज सेफ्टी और सिक्योरिटी हम उनसे वो एक्सपेक्ट कर सकें. एटलीस्ट इतनी मैच्योरिटी तो हमें बनती है. अगर आप खुद वो चीज को नहीं समझ पाओगे, आपके लिए कोई भी स्टैंड नहीं ले सकता है. इसलिए सबसे पहले आपको वो चीज जाननी है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. टिल द टाइम यू डू नॉट एक्नॉलेज योरसेल्फ, हु यू आर, व्हाट यू वांट, नोबडी एल्स इज गोइंग टू हेल्प यू विद एनीथिंग. आपके पेरेंट्स भी तभी आपके लिए हेल्प करेंगे जब आप उनको कुछ चीज बताओगे. अगर आपका फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, family is going against you, then we can go to any NGO, we can have the other organizations which are working for the welfare of the people, those who want acceptance in the society. Their part is going to be enforceable. So moving forward, as we are still witnessing crimes and peculiar behavior against the community, in your opinion, do you think we need a modification to the present law? I also want to know what is your opinion on anti-discrimination law. Okay. And what about the perspective of marriage between same sex? Do we need it now, or it is a need of this movement? What is your opinion? Yes, so I had mixture of 2-3 things that we have asked about the anti-discrimination laws. We will be thinking, we are taking about the stances that, particularly the workplace, the discrimination at the workplace. People really they do not disclose that about their identity, about their sexuality when they are at the workplace, because they fear that they might be ill-treated. So there was this workplace safety thing that was very much in talk these days, that because of this, people, those who are belonging to the LGBTQIA plus community, they fear to disclose. Why? Because they feel that some of the employers, those who are there, they might have certain difference when they see that he is not a normal human being, which is wrong per se. Similar instance of thing that I can give you. I was just surfing Facebook a few months back. There was this page, Yes We Exist, which is there in the Facebook. You can see. One of the posts in that pages, which I remember, was one of the couple, they had not been allowed to enter into a cafeteria. Leave about the workplace. They were not allowed to enter into a food joint hub, because it was written that they do not allow the homosexual peoples, only the heterosexual couples are allowed to it. So I think there was some issue with the restaurant owners and everything, and they had to face this backlash.
that they are not the LGBTQ plus friendly community. So the place of work where we are working, the employers, those who are giving the employment, they should also be aware about the rules, regulations, the terms, the clauses which are there for specific laws and there. So we have this Article 14 of the Indian Constitution, we have Article 15, we have Article 21 of the Indian Constitution, which give us the right that we should be treated equally. Article 14, general thing that we everybody has been provided with the equality. 15 talks about that there should not be any discrimination on the basis of sex. Now this sex word includes the sexual orientation of the person also, because if a person is being discriminated on the basis of who he is, what is his orientation, what is his choice is, in that particular manner, that is also prohibited as per our law. And then Article 21, right to life and dignity, that every person who is a human has the right to be, has dignityful life, and he should get the existence as proper existence and not just a mere animal existence that 21 is providing for. So whoever shall be the employer, whoever is the company where the people are going to work, they should adopt these kind of things which are LGBTQIA plus inclusive community. Not that they are going to be discriminatory against these people, because they are also part of the society that we are functioning, that we are living in. And might be that any kind of person or a person who belongs to this community excel in any field more than any heterosexual person is. So if we do not provide the equality of the opportunity to them, then that is clearly, blatantly the end of the existence or the law that we are trying to help them with. So when we talk about the equality of the opportunity to be provided to them, it is the material opportunities which are provided to the people, those who are so-called normal. Now, in my opinion, they are also normal for me, but the mindset, the frame of people to which we are addressing, to whom we are making this point very, very clear, that they are also us, like us. They are no different than who we are. Their existence is same. Their perception is same, their feelings are same, everything is same. Just it is the mindset of the people which needs to be reformed per se. That is what it is talking about. So there should not be any kind of discrimination at the workplace for any kind of the people, or there cannot be any thing which is going against the society or which is going against them. The Nalsa judgment or the transgenders thing that we were talking about, it has also given a right to the transgenders so that they can get the equality of the opportunity. Now we see in the social media various times that transgender people are being given the rights. They have been allotted this particular area of the work, or they are working in this and this sector. So this is what the growth is all about. Previously they were not given the opportunity. उनको इस बेसिस के ऊपर निकाल दिया जाता था काम से, या उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं थी. क्यों? जस्ट बिकॉज दे वर ट्रांसजेंडर. भाई इसमें उनका कोई गुनाह नहीं है, या अगर वो ट्रांसजेंडर हैं भी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. उनके पास भी वही दो हाथ है काम करने के लिए, उनके पास भी वही दिमाग है जो आपके पास है या जो मेरे पास है. तो फिर उनको हम लोग क्यों उस चीज से वंचित रखें कि वो काम नहीं कर सकते. दिस इज जस्ट वी आर बिकमिंग जजमेंटल व्हेन वी से दैट I think this person cannot work as it is, but let us provide them with the opportunity. Let us create that hope in them that yes, they are also capable and they are also able to do the work that normal people like us can do. Why not to give them the opportunity? The question lies there. Why not to give them the opportunity? So that is the reason various times in various articles, newspaper, social media posts, you will see that these days the transgenders are getting the work opportunity and they are successfully working. This is the work sphere that we are talking about. Gradually the work is going on, gradually the change is being implemented in our society, and this is how the society will change ahead also. Yes. So now what about this marriage perspective? Marriage perspective, if we talk about the thing that I addressed, that Special Marriage Act of India, it should be incorporating the marriages that
they will be solemnized under the Special Marriage Act, that two persons, those who are interested. Now the perfect term would be partners, because all are equal when we say they are equal before the law. So the correct appropriate term as per my understanding would be that they should be the partners, because male partner, female partner, or any queer partners are there, any other relationships are there. So they need to be addressed accordingly. So the law at hand do not provide us with the changing scenario or the changing circumstances. Here, as per the Hindu Marriage Act, a man and a woman will only marry. But if we want the progressive society, if we see the future for them, the future is very clear that there has to be amendments in various laws that are available at hand. That is, the marriages, first they need to give legal recognition. जब तक आपको law में recognition नहीं मिलेगा, तब तक आप अपने लिए एक मजबूत stand नहीं बना सकते, क्योंकि वो right आपको तभी मिलेगा जब आपको एक लॉ बनाया जाएगा उसके ऊपर और उस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा. इक्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन बिल 2020 में या 21 में निकला है, उसका भी अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है. सो विच प्रोवाइड्स यू अबाउट द अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ द वर्क प्लेस एंड एवरीथिंग. वो बिल भी बहुत बार पार्लियामेंट में दिया गया है, बट पार्लियामेंटेरियन से उसका वो रिकॉग्निशन, वो एसेंट नहीं आ रहा है. तो वंस इट इज पास्ड, थिंग्स विल बिकम मोर इजियर, क्वाइट इजियर फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी और द अम्ब्रेला सोसाइटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ के लोगों के लिए, इसके लोगों के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा हर चीज को करना. फिर भी सफर मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं या इम्पॉसिबल नहीं. Exactly, ठीक. So as per this conversation, ये बात समझ आइए कि the whole scenario can be achieved by threefold attempts. The first is that the part of law. The second is the part of the society. And the third is self. We have to recognize ourselves. We have to acknowledge ourselves. What are we? हम लोग कौन हैं, और हमें उससे खुश होना चाहिए. ये कोई दोष नहीं है या इसमें हमें कोई बीमारी नहीं दिखती है. दिस इज नथिंग दैट वी शुड बी अशेम्ड ऑफ. रादर एनी पर्सन हु इज मिमिकिंग अस, एनी पर्सन हु इज ट्राइंग टू बी ऑफेंसिव टुवर्ड्स अस, that person should be ashamed of what he or she is doing, not us, because हम तो जो हैं हम वो हैं. सोसाइटी को वो एक्सेप्ट करना पड़ चाहिए उस चीज को. And it is not only about the LGBTQ community, it is about the whole thing. We have to accept ourselves. What are we? आज हमें पता है कि ये LGBTQIA++ community है. कल को कोई और चीज अगर आ रही है, if tomorrow some other kind of words are coming, we are free to open, we are free to incorporate that also. So this spectrum is very very broad. इसलिए इसको बोला गया ना umbrella. Why this? Because like an umbrella, it is going to be a shelter for all the people, those who are belonging to this kind of the thing. That is the whole issue. Now, as a rainbow has so many colors, life is also colorful. That is the reason that we say that this Pride Parade, you explore yourself, you go with the colors, you have to be friendly with the colors. Why? Just because to see that it is not just black and white that people have been accustomed to. Rather, if they try to choose different colors, if they see the different colors, they are also same. आपको अगर लाल पसंद है, मुझे अगर काला पसंद है, तो हम दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बट आपके लिए लाल का जो स्पेसिफिकेशन है, जो अहमियत है, उसको मैं कभी अंडरमाइन नहीं कर सकता हूँ, या मेरे लिए जो अहमियत है आप उसको अंडरमाइन मत कीजिए. दैट इज व्हाट द सोसाइटी इज, हाउ द सोसाइटी हैज टू फंक्शन. वी हैव टू टेक एवरीवन into us, and then only we will be functioning and will be working. All right, sir. Now we are moving towards the end of the conversation, and it was a wonderful conversation. We have talked about the laws, the society, and about ourselves, and we came to a conclusion that it is a need of the hour that we should accept the community, we should accept ourselves and all the other people in the community, and the law should accept it. There should be laws. The society should be accepting, and it is a gradual process, and we will get there. But we have to take steps. We have to start accepting. Slow, short steps, but towards the right direction will lead us to a successful and a fulfilling
dream for the entire LGBTQIA plus community. Yeah. So the most important thing that we all should know and accept that every human being is equal and should be treated equally irrespective of the caste, creed or gender. Everyone is to be provided with the equal fundamental rights and should be able to live a life of liberty in India. For us, all we can do is to try change our conservative mindset and be more tolerant for the upcoming generation. The world is small enough for cruelty, so spread love and take care of each other. Thank you, sir, for joining us. It was a great conversation. I really enjoyed it, and I hope you all enjoyed it, and you all gained some knowledge. And thank you again for sprinkling your knowledge with us, sharing your knowledge with us. It's time to conclude the session. This is just the beginning of this great podcast initiative. There will be some interesting topics ahead. There will be some more interesting person ahead. There will be great personalities ahead, and we will be interacting with them with certain topics. Our sir will be there again. Definitely. I hope. So yeah, it is great talking with you guys. It is great. So let's end it. Thank you all. In the Name of Law, sponsored by Framestub, Sovan National Institute of Law.